Let me welcome you everyone to this awesome webinar, which is the Millionaire Gun, which presents the top 9 non-millionaire business secrets. अरे ये क्या है? What is top 9 non-millionaire business secrets? ऐसे तो कभी सुना ही नहीं था मैंने. Okay, but these are not only the top 9 non-millionaire business secrets, but these are killing your business. ये हमें पता ही नहीं है कि हम ये सब अननोइंगली कर रहे हैं और अपना बिजनेस बर्बाद हो रहा है इसमें. How many of you are getting what I am saying? Just type G in the chat box. Just type G in the chat box. top 9 non-millionaire secrets. Okay, जो अपने बिजनेस को किल कर रहे हैं. Yes. Okay. So let me welcome you again to this session, which is the part 1, and myself, Dr. Ashish Madrisul, and I am practicing orthodontist MBA, and I am also Amazon best-selling author, a business coach, specially. And this is what I am here for. Okay, so how many of you don't want to remain stuck or strangled or stagnated in your business? इधर अपने में से कौन से फ्रेंड्स है जो अपने बिजनेस में स्टक नहीं होना चाहिए? जैसे इस टाइप में जिनको नहीं चाहिए, जस्ट टाइप एन इन द चैट बॉक्स. एन 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 लिख दो कि वो आप आपके बिजनेस में ऐसे स्टैग्नेट है, हो गया है और वो नहीं चाहिए आपको. कहाँ फंस गया ऐसे लग रहा है, वो आपको नहीं चाहिए. राइट. जस्ट टाइप एन. थैंक यू सो मच अनीता मैम. थैंक यू कौशल अली. वंडरफुल. A tremendous response over here. Okay. And the next thing is, how many of you truly want to become a fulfilled or successful world class millionaire? World class millionaire किसको बनना है? Just type W in the chat box. W लिख के रख दो जिनको successful world class millionaire बनना है. Great. Thank you. Thank you, Anita ma'am. Yes. Thank you, Rizwan. Wonderful. I can see your responses. Okay. And anyone who does not want to be a millionaire, किसको millionaire नहीं बनना है, वो भी लिख दो M. वो भी लिख दो M. Any disturbance? Just check over here. Yeah, Manoj Bansal. Yes, please unmute. Mute yourself. Okay. वो भी वो भी लिख दो M. अच्छा, so I don't see anybody. Okay, so I welcome you again to the top 9 non-millionaire business secrets webinar. And thank you for joining on this. You could have been doing so many other things, but you chose to be here. And I thank you each and everyone for your presence and your priority. आप ध्यान से इधर आए. And in the next 90 minutes, okay, I'll do my 100% best, 100% best, that इस टाइप का नॉलेज आप लेके जाने वाले हो नेक्स्ट 90 मिनट्स में, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, ना यूट्यूब पे, ना वीडियो पे, ना बुक पे, ना कोई कोर्स में. ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस? जस्ट टाइप ई इन द चैट बॉक्स. ई लिख के दो कि आप ऐसे कुछ लर्निंग, ऐसे कुछ कंसेप्ट, ऐसे कुछ टूल्स जो आपको बिजनेस को ग्रोथ में, ऑटोमेशन में आपको इस टाइप में हेल्प करेंगे, विच विल लीव यू अनस्टक. यानी आप जो भी आपके लिमिटेशंस है, आपके जो भी थॉट्स है, विचार है, जो भी आपकी कंडीशनिंग हुई, उसमें से आप ब्रेक थ्रू होके आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. एंड बिलीव मी, वॉट एवर वर्ड मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं 100% सेंस से बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ. सो जस्ट टाइप W in the chat box if you are ready to go to become a world class millionaire. Just type W in the chat box. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, Katoch. Thank you, Ramdas. Yes. So it is wonderful, awesome audience today. And people are really excited, and you can just see in the next few minutes. Okay. अभी now, why is it called the secret? ये secret क्यों बुलाया जाता है? Okay. ये सीक्रेट क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये हम अननोइंगली ये सब कुछ कर रहे हैं. ओके, अननोइंगली वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स और हमें पता ही नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग द फॉलोअर. हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट विद दिस? लाइक हम जो आजू बाजू वाला है, जो दूसरे को फॉलो कर रहा है, वो दूसरा तीसरे को फॉलो कर रहा है, चौथा पांचवे को फॉलो कर रहा है, और हम उसी में भीड़ में अटके हुए. जस्ट टाइप बी. Just type just type B in the chat box.
Okay. Yeah, right. Great. So I think so my voice is clear now. Is it clear? Okay. Thank you. Thank you. Fine. Now, what is the key? Okay. So cure क्या है इस चीज को? Right. So how to get unstuck. Okay, how to get unstuck. Okay, so how to get unstuck is understanding. Okay, ये understand करना है हमें. Okay, what we have to understand. Okay, we have to understand few basic things. Are you able to hear my voice? Yes, my voice you are able to hear. Yes, just say V in the chat box if you are able to hear my voice. Just say V in the chat box. Yes, thank you. Thank you. So हमें क्या understand करना है? Okay, what we have to understand is the undeniable laws of business. Business के कुछ laws होते हैं because this whole world, this whole planet is based upon laws. Okay, and there are corresponding 9 spiritual laws of a millionaire business. Okay, how many of you are getting this? Like ये कुछ 9 spiritual laws है millionaire business के जिसके which are corresponding to these 9 non-millionaire business secrets. Okay, so we'll be seeing all of that. And when I'm meaning, मैं जब बता रहा हूँ कि millionaire business, okay, so what I mean to say is it is in American dollars. Yes, it is in American dollars, and it is 83.5 crore Indian rupees of pure profit. Yes, so this exactly is our goal. So how many of you are with me? If this is your goal and for this is the reason for which you are in this webinar today, just type G in the chat box. Just G likh do. Yeah, thank you. Thank you, Ramdas. Thank you, Anita ma'am. Thank you. So many of you, I am getting wonderful response over here. So great. So be hooked over here. Yeah. And today, what you are going to learn, okay, what you are going to learn is the blueprint. यानी जो blueprint steps है to launch, build and grow such a business. यानी जो जिस टाइप का business आप ऐसे run कर सकते हो और इसको grow कर सकते हो क्योंकि business तो बना और run तो कोई भी कर सकता है, but the most important thing is how to grow such a business. Okay, so just type G in the chat box again if you are over here to grow such a business. Yes, yes, wonderful. And the second thing, what you are going to learn is the master steps. Okay, the master steps to automate this business with systems. Systems. आप में से किसने सुना है systems? Just type S in the chat box. Oh yes, oh yeah, yes, I can read printing press. Yes, wonderful. And the third thing is the outline matrix. यानी ये पूरा blueprint का matrix क्या है? Okay, with which you'll get all this in effortless ease, and that too with least resistance. यानी ज्यादा बहुत कुछ stress लेके बहुत कुछ effort लेके आपको ये सब कुछ नहीं करना है. Okay, so since we are going to spend some time today, is it fair that in the next 1 minute I'll share very little about my background as to why I do what I do. If it is okay, for the next 1 minute, 1 minute में आपके साथ share करता हूँ why I do what I do. Yes, thank you, Anita ma'am. If it is okay, if I can have your permission, just type S. Yes, thank you everyone. Okay, so very briefly, I'm just starting. Okay, so born in a family of 9 doctors in Pune, I finished my medical education in 2005 में मैंने खत्म किया. Okay, and when I started my practice in the highly upmarket Kalyani Nagar, Pune, I was totally swept off the ground. यानी मैं पूरा wash out हो गया था because I really didn't know as to where to grow my business, how to find my patients, how to get the right target patients at the right price point, and how to sell to them. Yes, and I went on a ambitious, random, stressful journey. Okay, and what happened was after this random, stressful work, just at my age 29, I went into a very, very fatal internal year neo growth. Neo growth, yes. And this problem was there for the first 5 years, the 5 years of my practice.
how brutal, how sad this was for a very ambitious doctor. Okay, but thankfully, after my recovery, after multiple surgeries and so many things, okay, I went on a gradual re-education journey. Okay, gradual re-education journey, like a one learning course, a second learning course, and so many nationally, internationally. Then I went on to read my complete my MBAs, my PGDMs, and so many other things. And it really worked. Yes, and it really worked. And from there on, I'm on a mission. I'm on a mission in Million to help 10 lakh private business owners, they may be doctors or professionals, to launch, build, and grow their business with effortless ease and live a life of highest success and fulfillment. And how many of you want to live a life of highest success? Just type S in the chat box. S in the chat box. If you are with me in this mission, yes, thank you. Thank you, Ramdas. Thank you, Anita ma'am. Thank you, Katod sir. Thank you, Ramdas sir. Wonderful, wonderful. And this knowledge which I'm going to share with you today, I feel like as you are an ethical businessman, you deserve this, as well as I'm an ethical businessman and I deserve this. And how many of you think that you, as an ethical businessman, deserve the best? यानी आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप वर्दी हो, आपको सच में वो सब नॉलेज पाने की आप में आशा है और जरूरत है, एंड यू रियली डिजर्व? जस्ट टाइप डी इन द चैट बॉक्स. Just type D in the chat box that you deserve the best of life and success because you are an ethical businessman. Yes. Thank you. Thank you. Wonderful. Wonderful. So, just very shortly, this is my background, my biography. Like, I'm a practicing orthodontist with all my certificates, with my Google certification and Gold certification. Also, I'm a member of the American Marketing Association and the bestseller author and the co-founder of Millionaire Again. Okay, these are some of my credentials, my clinic, my certifications. Yeah, and these are my wonderful mentors and coaches. Okay, this is the international trainer Blair Singer, Siddharth, Vivek, then Rajiv, and a wonderful Salman sir. Okay, also Tony Robbins. Yes, and these are my all the various digital masters from whom I am trained for. Maybe some of you, आप में से किसी कोई कोई लोगों ने इनके साथ देखा होगा या मिला होगा. Okay. Okay, so before we start into the main learnings, okay, let me share. There are some ground rules. Okay, there is a code of honor. Okay, code of honor is for the next 90 minutes, just 90 minutes, friends. Just switch off your mobile, grab a pen and paper. Okay, and if possible, join from a laptop. Okay, and allow me to be fast because you are 100% attentive, so you will get the best knowledge for sure. Yes, and all the questions, जो भी questions होंगे वो end में आप ले लो, and be responsible for your actions on Zoom, on the audio video sharing, and proactively support each other and appreciate each other. Great. So if you are with me, just type W in the chat box. Yes, yes. If you're with me, just type W in the chat box. Yes, coming to all the learnings. Yes, thank you, thank you. So let us start with the learnings. Let us start with the ninth non-millionaire secret. Yes, ninth non-millionaire secret. How many of you are excited to learn the ninth non-millionaire secret? So ninth secret. Yes. वंडरफुल. सो द सीक्रेट इज मार्केटिंग इज अबाउट स्नैचिंग. आप में से कौन से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मार्केटिंग गलत है, मार्केटिंग करेंगे तो लोग मुझे देखेंगे, पीपल विल बी बायस, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? जस्ट टाइप, जस्ट शो योर राइट हैंड और जस्ट टाइप एम इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है मार्केटिंग इज अबाउट स्नैचिंग. और या तो आप छुप छुप के मार्केटिंग करते हो, या तो आप दिल खोल के नहीं करते हैं, और या तो आपके बारे में कुछ तो बायस है. या हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट बायस? जस्ट टाइप बी इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप बी इन द चैट बॉक्स. Yes, yes, wonderful.
So marketing is about snatching. This is the ninth non-millionaire secret. Wonderful. So what is there in the next? Okay. So what is there? So what is the actual secret? The actual secret is marketing is about values. Okay. This comes from Steve Jobs. Okay. Steve Jobs, who is the biggest businessman, the biggest brand creator in this world. Okay, how many of you have heard about Steve Jobs? Marketing is about values. But अभी इसका मतलब क्या है? How many of you thinking इसका मतलब क्या है? Just type M in the chat box if you're thinking what is the meaning of this quote. यस यस, इसका मतलब ये है क्योंकि ये सब जगह है, पर इसका मीनिंग क्या है, राइट? द मीनिंग इज जो वैल्यूज जो है, तो अपने वैल्यूज जो है वो अपने लाइफ सिस्टम्स, ये अपनी जो लाइफ में हमने क्या क्या देखा है, सुना है, अपने क्या थॉट पैटर्न्स है. ओके, सो एनीथिंग you aspire for, dream and desire, okay, for the highest good of a person, family, community and world together, this is values. How many of you are getting it? Just say we yani kya, we for values. Okay, values yani whatever is supporting what your dreams, आप जो भी aspire करते हो उसके बारे में, that is the value. So everything understood till now? Yes, yes. Thank you, Ramdas sir. Thank you, Anita ma'am. Wonderful. Yes, and because let me tell you, there is a four eye problem. Okay, four eye problem. The four eye problem is at any business, koi bhi business ho, it could be a small business, it could be a local business, it could be a multi-millionaire business, okay, or it could be a great millionaire, multi-billionaire business. वो भी बंद होते हैं just because of these four problems. Okay, so first problem is insufficient inquiries. Any inquiries nahi hai, leads nahi hai, customers nahi hai. Second is ill paying inquiries. Okay, that aate to hai but they are not ready to pay. Yes. And third is the irrelevant inquiries. Yes. And the fourth is the inconsistent inquiries. There are no repeat customers, no referred customers. Okay, so this is the primordial problem of any business or practice growth. How many of you have understand and how many of you agree that this is the problem? Because without this, without overcoming this problem, we cannot aspire. Yes, thank you, Anita ma'am. Thank you, Ramdas sir. Yes, so without overcoming this problem, we cannot move forward. यानी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते इसके बिना. Okay, so what is the cure? Okay, इसके लिए cure क्या है? So let us see what Grant Cardone, the billionaire mentor, what best known beats best. Best known product, best known service, best known person will always beat the best. Is Coca-Cola good for you? Everybody knows it. I mean, is it the best product for you? Are the contents in the Coca-Cola the best? I don't think so. However, you will see it in every shopping center, every grocery store, every food chain, every McDonald's, Burger King. You will see Coca-Cola in every location, in every place where you could buy soft drink on planet Earth. Best known beats best. Okay, so you are getting it. You heard what he had to say. Like the best known. Okay, so जो भी whoever in the industry who is best known, he will always be the best performing. And he जो भी technical skills में सबसे best है. Okay, so the best known brand will always be the best. So how many of you are getting that? We have to strive towards this goal of becoming the best known. Just type B in the chat box. Be in the chat box if you have heard and if you have listened to this. Yes. Thank you, Ramdas sir. Thank you, Katos sir. Wonderful. So, what is the next thing into this? Okay. So, the next thing to analyze this is the 3-pack billionaire marketing secret. Okay. जो marketing secret जो है, which is into the spring ball model. Okay. So, all the complex learnings. Okay. ये सब 3-pack secret में है. Okay, the first pack is create. Okay, we'll be understanding this, but first तो है create करना है. Second is catalyze and third is catapult. Okay, wonderful. So how this is going to happen? Agar like if you are able to see this,
ओके, सो फर्स्ट थिंग होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फनल. आप में से कितने लोगों को सुना है कि ऐसे मार्केटिंग फनल बोल के चीज रहता है? ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया है. ओके, सो ये जो फनल होता है, द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो ऊपर लिखा है, इज अवेयरनेस. यू कैन सी इन द स्लाइड. ओके, द सेकंड स्टेप, यानी जो भी वॉट एवर मार्केटिंग और प्रमोशन वी आर डूइंग, इट इज एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग. वो अवेयरनेस करके, द सेकंड स्टेप विच इज द डिस्कवरी. The third step is the evaluation. The fourth step is engagement. And here, from evaluation to engagement, how many of you can see there is something written as remarketing? ये remarketing क्या है? ये remarketing तो सुना है या नहीं सुना है? But there are tools in which we can do drip marketing. We can send a sequence of messages on automation. Yes, friends, and which will go into your sales. यानी आपका first sales होगा, and from sales will come repeat customers and referred customers, which is nothing but your brand loyalty. Yes, this is the continuous value education. So how many of you have got a very simplified one step formula of all the funnels? Agar aapne suna hoga, just type S in the chat box if this is simplifying things for you. बिल्कुल simplified way में आपको present किया हुआ है. Okay, the funnel system. Okay, and what is the next thing after this is, like when we are placing this funnel, पहले तो हमें strategy decide करना है. ये हमें पुश मार्केटिंग करना है या पुल मार्केटिंग करना है. ओके, तो ये पुश और पुल क्या है? आप में से कितने लोगों ने सुना है पुश और पुल? यस, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो है जो पुश एंड पुल. ओके, तो व्हाट इज पुश मार्केटिंग? बिकॉज अगर हमने ये कंसेप्ट अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो ऑल द मार्केटिंग, वॉट एवर द एफर्ट्स जो है, आप वीडियोस करते हो या वेबसाइट करते हो, एवरीथिंग विल बी वर्थलेस. ओके, सो how many of you are excited to learn this push marketing and pull marketing? Okay, so push में क्या करते हैं? We directly push our products and services. Okay, so इसमें हम directly, जैसे it could be on Google, it could be on Google Ads or your newspaper or pamphlets and all those things. Okay, and pull में क्या करते हैं? Pull में we give them value added education based perks देते हैं. Like it could be ebook, it could be some training course or video, and then we pull them to buy our first products or bigger products and services. Okay, great. So this is understood, I think so. So let me just be slightly fast over here, because continuous automated education and engagement into a funnel. This is very important, friends. Continuous automated engagement. हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने पास एक कस्टमर आ जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, एंड देन वी जस्ट थिंक लाइक why word of mouth marketing does not work. Okay, how many of you think that word of mouth marketing, okay, word of mouth marketing बहुत slow काम करता है या काम ही नहीं करता है? Just type W in the chat box that you think that जो माउथ जो ऐसे रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं या रेफर्ड क्लाइंट्स होते हैं, वो होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं. यस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, दिस इज व्हाट वी सॉ. दिस फनल मार्केटिंग सिस्टम, this is developed by the father of modern marketing, who is Philip Kotler. Yes, and the same funnel, friends, applies to Apple even. Okay, even with even to Apple, जैसे like if you have you have purchased Apple products or not, but when they launched into the market, they first came with a slow value, high volume product. Okay, which was nothing but your iPod. Okay, and the next one for this, okay, iPod के बाद उन्होंने iPhone launch किया, and from the iPhone then came the MacBook, and then came the bigger computers. How many of you think that Apple was such a big company, they could have directly launched their laptops? How many of you think that Apple could have directly launched their laptops even? Okay, but they did not do so. वो वैसे उन्होंने किया नहीं है, right? So how many of you are with me till this point? Just type L in the chat box. L in the chat box, that you know that Apple did not do so. Yeah, wonderful, thank you. Yeah, so what the founder of Apple has to share. Okay, हम एक एक करके डिसफर करेंगे. Okay, so we will watch this wonderful video. To me, marketing is about values.
This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. The Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. Best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Full at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. That those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. And so we wanted to find a way to communicate this. The campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Okay, so how many of you have really understood this video? Okay, do you want to tell me, do you want me to tell you in one sentence what this video about? Just type W in the chat box. एक सेंटेंस में आपको वीडियो सिंप्लीफाई करके वीडियो का मैसेज आपको बताना, आपको अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट टाइप W in the chat box, or if you have understood this video it's okay. Okay, just type W in the chat box. yes Ramdas sir, yes. So ये जो वीडियो है, okay, so this video में this is about a computer. Okay, so how many of you understood that this is about a computer? ये कंप्यूटर का फर्स्ट जो एप्पल का ब्रांड का सबसे पहला जो वीडियो है, इसमें कंप्यूटर ही नहीं है. वो जो एंड में दिखाया उन्होंने एड, वो एड में कंप्यूटर ही नहीं था. Okay, so what I mean to say is whenever we are selling our products or services, we are pitching about how this the customer is going to benefit and how this is going to cause a radical change into their life. How many of you are getting this? Just type L in the chat box. L in the chat box. ये जो एड देखा आपने एंड में, वो एक कंप्यूटर की कंपनी का एड है. उसमें कंप्यूटर था क्या?
हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दैट? उसमें कंप्यूटर था, आपने कंप्यूटर देखा उसमें? वो कंप्यूटर के बारे में बात ही नहीं किया। दे वर दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. So just type M in the chat box if you are with me and you have understood the mind of this billionaire mentor Steve Jobs, who has lived on this planet. And in this video you have got the crux of this mind. क्योंकि ये वीडियो तो है सब जगह, पर ये एक्सप्लेन करने के लिए, इसका क्रक्स समझने के लिए आपको ये मास्टरमाइंड चाहिए, ग्रुप चाहिए, वेबिनार चाहिए. Okay, so if you are with me and if you are excited to go into the next step, just type E in the chat box. Just type E in the chat box if you are excited to go into the next secret. Yes, thank you, Kritos sir. Yes, Me. wonderful. So let us go into the next step, which is the non-millionaire secret number 8. Non-millionaire secret number 8, which is selling is exploiting. How many of you think that selling is exploiting? Like you don't like आपने सुना होगा, देखा होगा, or you don't like people. You don't like people who are like जो ऐसे बेचू like you must have heard like बेचू type के लोग रहते हैं, और so like you don't like these people. Okay, but let me tell you the secret. Let me tell you the secret for this. Okay, because most of the times most of the times we have seen अपना conditioning ऐसे हुआ है, maybe through our movies or maybe through those stories, कि मिलेनियर्स जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लस्टफुल होते हैं, मनी हंग्री होते हैं, लूटर लूटर होते हैं. तो आप में से कौन से लोगों ने ये ऐसे कुछ फोटो देखा है, आपने बचपन में देखा है, और हमें ऐसे लगता है कि अरे ये लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, एंड ऑल दैट थिंग. ओके, just type B in the chat box. Just type B in the chat box. Okay, yes, but let me tell you, selling is helping. Okay, selling is helping and serving. This is the eighth spiritual law of a millionaire business. Okay, and this comes from my mentor Blair Singer, who is the rich dad advisor. Okay, आप में से रॉबर्ट कियोसाकी किसने सुना है? रॉबर्ट कियोसाकी. So he is with him, he handles the businesses of Robert Kiyosaki. Okay, wonderful. Okay, so the next step in selling, okay, is the fortune is in the follow up. Okay, ये जो कंसेप्ट है, राइट, आप में से लाइक आप में से कितने लोग ऐसे बेस्ट दुकान ढूंढने के लिए, या बेस्ट होटल ढूंढने के लिए, या बेस्ट डॉक्टर ढूंढने के लिए गूगल पे जाते हैं? ओके, बट कभी आपके मन में आया था कि हम एक बार हम इंटरनेट पे जाके ढूंढते हैं, इंटरनेट में जाके ढूंढते हैं कि कस्टमर के इंक्वायरी आने के बाद कितने बार फॉलो अप लेना है. ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज, ओपनली लिखा हुआ है, ओपनली, यस फ्रेंड्स, ओपनली लिखा हुआ है दैट व्हेनेवर देयर इज एन इंक्वायरी, द फॉलो अप हैज टू बी टेकन मिनिमम 7 times. Just type 7 in the chat box if you agree. And if you are doing this, then it's mind blowing. But if this is new, just type N in the chat box. अगर ये कंसेप्ट कि मिनिमम 7 बार फॉलोअप लेना है, 7 बार सेल्स का फॉलोअप लेना है, तो 7 बार लोग हमें माइंड में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बट रिमेंबर, सेलिंग इज हेल्पिंग. उनको डिसीजन लेने में मदद करना है, उनका लाइफ इंप्रूवमेंट करने के लिए मदद कर रहा है. ओके, सो इफ यू बिलीव दिस, wonderful, and you are with me, thank you, wonderful, just Ketan Padi sir, yes, wonderful. So let us move to the next one. Okay, that whenever ये help कर रहे हैं, तो help क्यों कर रहे हैं? Because everybody on this planet is born with 6 human needs. आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? Like even if you realize this, अगर आप मानते हो, आपको पता है या नहीं भी पता है, these are the 6 human needs. ये आप में प्रोग्राम करके ये प्लेनेट पे भेजा है आपको. Okay, so 6 human needs. So first human need is certainty. Okay, जो भी अपना food, clothing, shelter, safety, security, all that thing. Okay, the second human need is uncertainty. Okay, so uncertainty is your adventures, your holidays, your travel, your masti, and all that thing. Okay, the third human need is significance.
How many of you feel insulted if somebody insults you? Everyone, right? Everyone, everyone over here, because that is a program. वो आप में प्रोग्राम बना हुआ है. So you, everybody over here wants significance. Just type S in the chat box if you agree with me that you want to feel unique, you want to feel valuable, important, special, maybe in your circumstance, in your family, and nobody talks about this openly, but it is written in the highest textbooks. The fourth one is connection, connection and love. Okay, connection and love is it's not the intimate love or your personal love, wo nahi, but a feeling of connection, a feeling of being identified or being famous, being popular. Yes, so these are all needs. And the fifth need is of growth. Okay, growth is of the next level of contribution, the next level of abundance. Okay, so this is the expansion, because the the universe is also in continuous expansion. How many of you believe that the universe, ye jo earth is a part of this Milky Way is a part of all these novas and astronovas, but the whole universe is also growing. The whole universe is growing in abundance and scale, so why shouldn't you? Yes. And the sixth human need is contribution. Contribution is the need for service of higher needs, of higher levels of contribution. So if you are with me with all these human needs, because once you understand your customer from these six human needs, you will never feel that you are selling. आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि आप बेचू है या आप कुछ बुरे काम कर रहे हो, एनीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी टिल दिस पॉइंट? जस्ट टाइप पी इन द चैट बॉक्स, पी इन द चैट बॉक्स, अगर आपको सिक्स ह्यूमन नीड समझ में आया और इसका रेलिवेंस क्या है अपने सेल्स के साथ. जस्ट टाइप पी इन द चैट बॉक्स. यस, थैंक यू कौशली सर. यस, थैंक यू जसकिदन पारी सर. यस, वंडरफुल. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने इसके बारे में ये पर्सपेक्टिव से कभी भी सोचा नहीं था. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी ब्रिंग टू दिस वेबिनार. ये जो भी सोच है, हमें अपनी सोच बदलनी है. ओके, एंड व्हेन वी आर सेलिंग, अगर आप एमबीए करने जाओ 3 साल का एमबीए इन सेल्स, आपको इतने सारे टेक्निक्स बताएंगे. यू आर स्पिन सेलिंग, नीड सेलिंग, कंसेप्चुअल, स्नैप, चैलेंजर, सैंडलर, एमेडिक, सॉल्यूशन, इनबाउंड. पर आज हमें सिंप्लीफाई करना है. आपको सालों की नॉलेज 90 मिनट में मिलने वाली 90 मिनट्स फ्रेंड्स. एंड व्हाट इज द फर्स्ट टेक्निक? फर्स्ट टेक्निक इज फैब. आप में से कितने लोगों ने सुना है फैब टेक्निक? ओके, द फैब टेक्निक इज फीचर्स. ओके, तो अगर इफ यू आर सेलिंग अ मोबाइल, तो मोबाइल में क्या फीचर्स है, या उसके क्या उसमें माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड क्या है, ऑल दैट थिंग. बट सेकेंड इज द एडवांटेज. तो इसके वजह से एडवांटेज क्या होने वाला है, दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट. ओके, एंड द थर्ड वन इज द बेनिफिट. इसके वजह से उनके डेली लाइफ में उसका आउटकम क्या होने वाला है. ओके, सो आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. अभी प्रिंटिंग प्रेस है. ओके, सो इफ देयर इज अ प्रिंटिंग प्रेस, एंड इफ दैट वो प्रिंटिंग प्रेस में कुछ माई बी यू आर हैविंग सम मल्टी कलर और सम सैटिन प्रिंट और समथिंग. ओके, बट वो सैटिन प्रिंट हो गया उसका फीचर. ओके, उसका एडवांटेज क्या हो गया कि वो क्लियरली दिखेगा, यानी ऑल द प्रोडक्ट्स में वो क्लियरली दिखेगा. एंड द थर्ड थिंग, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट क्या है कि आपका ब्रांड इमेज जो है, बिजनेस का ब्रांड इमेज, बिजनेस का रिकॉल बढ़ेगा. सो दिस इज द आउटकम फॉर. और उनका जो कस्टमर का है वो 2x वैल्यू होगा, या कस्टमर का कन्वर्जन होगा, या उनका बिजनेस ग्रो होगा. ओके, सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट टाइप FAB इन द चैट बॉक्स, यानी आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा फैब, फीचर, एडवांटेजेस और बेनिफिट. ओके, क्योंकि ये जो है बाद में इसका जो उनके लाइफ में आउटकम क्या होने वाला है उसके बारे में हमें बोलना है. ओके, नॉट अबाउट द फीचर, यानी उसका जो भी प्रिंट का whatever, or you may be in some any other business. Okay, the second thing, which is नील रैकैम. नील रैकैम किसने सुना हुआ है? नील रैकैम, just say okay, nobody. So what is Neil Rackham's is the spin selling. Okay, there is a very wonderful book on this. If anybody wants, just type spin selling by Neil Rackham on Amazon. Okay, but let me tell you,
एक सेंटेंस में पूरा 350 पेजेस का एक सेंटेंस में क्रुक्स बताओ. जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स. एक सेंटेंस में आपको 350 पेजेस का अगर क्रुक्स बताओ होगा, इफ यू वांट टू नो, जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स. या, थैंक यू गौरव कुमार, थैंक यू रामदास सर. यस, तो इसका क्रुक्स क्या है? सिचुएशन, प्रॉब्लम, implication और need payoff. Okay, अगर there is a client, okay, and if they don't want to purchase such and such product, उन्होंने objection लिया. Okay, so in their situation, okay, उनके situation में वो प्रॉब्लम जो भी है उनके साथ, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यानी 2 साल बाद, 10 साल बाद, ओके, या वेरियस पीपल, प्लेसेस और सर्कमस्टेंसेस. ओके, वो कस्टमर जो है, अगर इफ ही इज नॉट लाइक, अगर वो कार इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, ओके, फॉर एन एग्जांपल, तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्लेसेस में और अलग अलग पीपल के साथ उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ओके, वो उनको समझाना है. ओके, एंड अगर उन्होंने अपना ये जो है परचेस किया प्रोडक्ट या व्हाटएवर सर्विस, ओके, तो उससे उसको फायदा क्या होगा. Okay, so बाद में, okay, so later it is going to become difficult, okay, and costly for him, and today it is inexpensive, cheap, and it is easy. इतना उसके माइंड में अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के साथ उसको बता दिया, okay, this is about spin and there is a big question here. Okay, it is all about asking questions. Okay, so let us go to the next one, and this was the wonderful easiest way of explaining you this sales process. Okay, so this sales process jo hai, which is nothing but in the exactly the replica of that marketing funnel. How many you remember? Okay, तो ये sales process जो है, the first process जो ऊपर में दिख रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, ऑल दोस थिंग्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. उसमें से आएगा सस्पेक्ट. ओके, सो दिस जॉब मार्केटिंग और सेल्स में बहुत कंफ्यूजन है, राइट. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग दैट लीड, यानी वो लीड आ गई, ओके, आपका फर्स्ट फोन कॉल आ गया, ओके, या आपका फर्स्ट कस्टमर आपके डोर तक आ गया बिजनेस के, ओके, मार्केटिंग का जॉब खत्म हो गया. यस, बहुत बहुत लोगों को मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस ही नहीं पता होता है. और एक बार वो इंक्वायरी आती है, ओके, एक बार वो इंक्वायरी आती है, तो वो इंक्वायरी आने के बाद how many times you take follow-ups and repeat discussions to make the first point of purchase. Any wo moment when the client will put their hand into their pocket, bring out their cash or credit card and give it to you, and they will tell, okay, charge me money. This is called sales. How many of you have got this concept clear? Just type C in the chat box कि मार्केटिंग और सेल्स में आपको डिफरेंस है नहीं. लोग 3-3 साल पढ़ते क्या है, एमबीए मार्केटिंग में 3 साल क्या पढ़ते हैं, और एमबीए सेल्स में 3 साल क्या पढ़ते हैं. इट इज जस्ट दिस प्रोसेस. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माइंड ब्लोन विद दिस होल कंटेंट टुडे, दैट मार्केटिंग और सेल्स में 3-3 साल लोग पढ़ते क्या है, और अलग अलग ऐसे यूनिवर्सिटीज में थियोरम्स और अलग अलग टेक्स्ट बुक्स और अलग अलग सिलेबस क्यों बनाया हुआ है. ओके, सो if this is clear, we'll go into the next step, which is the suspect. Okay, well, in the sales also, the first step is the suspect, the second step is the prospect. यानी एक बार वो आता है कंसल्टेशन के लिए या आपके डिस्कशन के लिए या आपसे मीटिंग के लिए, तो सेकंड मीटिंग होती है, फिर थर्ड मीटिंग होती है अप्रोच, फिर उसके बाद उनको पता चलता है, ओके फाइन, दिस पिन सेलिंग इज वर्किंग. यस, और दिस पिन सेलिंग वर्क होने के बाद आता है निगोशिएशन. फिर वो पूछेगा, ओके, why not this price or why this benefit, and then comes to closure where you add bonuses and you give freebies and bundling and so many things and you get the first order. How many of you are excited? Just type oh in the chat box. Oh, to get the first order and to create the new league. Yes, thank you. Thank you. Wonderful, wonderful. So everybody is with me till this point. Okay, with me till this point, then I'll explain you the non-millionaire secret number 7. Just type 7 in the chat box if you are excited to learn this non-millionaire secret, क्योंकि ये हम बार बार करते हैं और बार बार करते रहते हैं. That save and save money like a miser. Everybody who likes to save money,
who likes to save money. Okay, so the non-millionaire secret, okay, this non-millionaire secret number 7 when it comes to your business growth is save money like a miser. Okay, save money like a miser, but why? ओके द सेव मनी लाइक अ माइजर एंड द सेव्ड मनी यानी हम क्या करेंगे आज 1 लाख बचाएंगे दूसरे महीने 10 लाख बचाएंगे फिर 10 फिर 1 करोड़ बनाएंगे फिर 2 करोड़ और फिर 5 और फिर सोचने लगते हैं अरे ये लोग 2-2 3-3 हजार करोड़ बना रहे हाउ मेनी ऑफ यू आर हैव थॉट अबाउट दिस कि ओके इन दिस पास्ट 1 मंथ आई हैव मेड 1 लाख 6 महीने में मैंने 10 लाख बनाए पिछले 20 सालों में मैंने 2 करोड़ बनाए अरे ये लोग 3-3 हजार करोड़ कैसे बनाते हैं वो उनको कितने लाइफ टाइम लगेंगे हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट अबाउट दिस जस्ट टाइप टी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव थॉट अबाउट दिस या आपने कभी इसके बारे में सोचा भी है या नहीं भी सोचा है तो जस्ट टाइप टी इन द चैट बॉक्स लाइक व्हाट डज इट टेक एंड व्हाट उनको मोटिवेट क्या करता है लाइक इज इट मनी क्योंकि अगर इफ इट वाज ओनली अबाउट मनी तो पैसे अगर कमाने हैं तो पैसे खर्चा करने के लिए तो भी टाइम चाहिए okay and if you're not having the time to enjoy all the money at one point of time we start thinking what's the use just type you in the chat box आपने ऐसे अगर सोचा है ये सब इतने 1000 करोड़ 2000 करोड़ पैसे कमाने के लिए अगर टाइम ही नहीं उसको एंजॉय करने के लिए व्हाट्स द यूज या थैंक यू रिजवान सर थैंक यू अनिता मैम उसका यूज ही नहीं है okay so save and save money like a miser and the saved money will build a millionaire business single handedly okay ये होता है the second the seventh non millionaire business secret okay और इसका supporting millionaire business law क्या है okay supporting millionaire business law is you don't build a business यानी हम business नहीं बनाते you build people and people will build a business आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हमें लोगों को बनाना है पर जब भी कोट आता है ओके दैट यू whenever you are building people people will fail okay but systems will always sustain and thrive okay systems will be successful and like as Warren Buffett says if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Yes, this is a quote from Warren Buffett. And he also says that people fail, but systems do not. How many of you are getting really excited to learn into the next step? The next step, which will simplify how to build people, how to put them in system. क्योंकि सुना तो बहुत है, पर ये system क्या है? Yes, so ये system जो है, which we are going to see in this step okay which is nothing but growth automation how many of you think that ये जो पूरा universe है ये system पे चल रहा है just type s in the chat box यहाँ पे whatever god और भगवान और whatever universal mind वो कभी इधर डायरेक्टली आके कभी कुछ करता है yes नहीं this whole universe okay this whole earth this whole solar system this whole life itself, right from the seed to the growth, everything is on total automation. How many of you are with me that this entire thing is on automation? Just type A in the chat box. ओके अगर आपने इस ये पूरे यूनिवर्स के बारे में ये पूरे लाइफ के बारे में इस टाइप में अगर सोचा नहीं होगा कि आपके जो ह्यूमन इमोशंस जो डाल दिए आपके आपके आप में वो ह्यूमन इमोशंस में पूरी पूरी सृष्टि चल रही है the whole entire universe is operating on just emotions and that's it whatever emotions you want agar aap any masculine emotions ho gaye ya feminine emotions ho gaye and this exactly is the formula for growth automation the 6 human needs is the formula for growth automation and this exactly is going to come into management क्योंकि जब हम मैनेजमेंट आते हैं when we are coming to this point of management there are lot many theories Peter Drucker ho gaya then there are so many Seth Godin and all those things there are different levels of management but once we understand the core fundamentals okay the core fundamentals okay तो उसमें जो हो गया first step is operations okay so just type O in the chat box operations okay operations यानी once the sale is happened उसके बाद like how we deliver that product okay so that is the operations को लगेगा आपकी टीम
Okay, so the team will be there, and when they are operating, all the accounts has to be handled, and there has to be continuous innovation. That's it, friends. We just have to understand that the team is operating on emotions, and these are automated from the whole universe, the universal mind, and that's it, management. Yes, friends. So how many of you are getting the crux of management? Just type M in the chat box here today. M in the chat box. Yes, thank you, Katot sir. Yes, thank you, thank you. Yes, and when we are building this, we have to put system. Okay, सिस्टम आप में से कितने लोगों ने सुना है ह्यूमन बॉडी में सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके, तो उसमें ऐसे कभी बोला जाता है कि हमें एलिमेंट्री पार्ट है या सर्कुलेटरी पार्ट है. ओके, या एक्सक्रीटरी पार्ट है. ओके, उसमें क्या बताया जाता है? इफ यू जस्ट रिकॉल हमें क्या बताया जाता है? लाइक द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, एलिमेंटरी सिस्टम, nervous system. What is the whole body is going on a system? Okay, and what is the system? सिस्टम को मैं 4 स्टेप में आपको इतना सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं. ओके, आप जो भी आज कर रहे हो, ओके, द फर्स्ट स्टेप इन योर बिजनेस, अगर आप बिजनेस चालू किया है या वॉट एवर स्टेज ऑफ बिजनेस, ओके, फर्स्ट थिंग आपको करना है आइटमाइज. ओके, आइटमाइज यानी क्या करना है? रोज आप जाते हो बिजनेस में, आप पर्ची सिस्टम चालू करो. पर्ची सिस्टम यानी वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, या यू आर डेलीगेटिंग टू योर पीपल. ओके, जस्ट टाइप नोटिंग देम. ओके, रोज छोटी छोटी चिट्ठी बनाओ. ओके, और उस आइटमाइजेशन से आपको एक एफएमएस वर्कफ्लो आपको नोटिस होगा कि आप रोज कौन से काम करते हो, आप वीकली कौन से काम करते हो, आप मंथली कौन से काम करते हो, और इसका वर्कफ्लो क्या है. यानी एक काम के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर, और फिर एंड. ओके, इतना एक बार आपको पैटर्न पैटर्न नजर आया ना, पैटर्न, फिर आप एक प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो. हम में से कितने लोगों ने बीपीओ सुना है? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. यानी आप जिस जिस भी शहर में रहते हो भारत में, वो शहर में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर वो बिल्डिंग में से आया, बीपीओ. आपने कितने लोगों ने सुना है बीपीओ? जस्ट बी इन द चैट बॉक्स. बीपीओ, वो 2005 2010 में बड़े बड़े कांच की बिल्डिंग भारत में एक बार होने लगे, और हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया. राइट. वो बीपीओ में क्या होता है? बीपीओ का फुल फॉर्म एनीबॉडी नोज? बीपीओ का फुल फॉर्म बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जो कॉल सेंटर होते थे, बड़े बड़े जो अनएम्प्लॉयड इंडिया की जनता उधर जाके महीने के 50, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख सैलरी लेते थे, वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और वो जो है आइडिया, जिसमें से फर्स्ट टाइम इंडिया में ढेरों अमेरिकन डॉलर्स आने लगे और इंडिया का जीडीपी बढ़ने लगा, वो है प्रोसेस. दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग. दिस इज द क्रुक्स ऑफ द हाई वैल्यू मिलियनर माइंड्स. जो बड़े बड़े मिलियनर बिजनेसेस थे अमेरिका के, जो उसके ऑपरेशंस इंडिया में से बनते थे, और उसमें से आता है एसओपी. एसओपी इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें आप हैप्पी फास्ट डिलीवरी दोगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर माइंड ब्लोन दैट ये कंसेप्ट, जिसके बारे में आज आप तक आपने उपभोग किया है, पर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था. ये क्या चल रहा है? बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, कांच की बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े आईटी पार्क्स बनाते हैं, उसमें करते क्या है? जस्ट टाइप जी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज दीज आर ग्लास बिल्डिंग्स. ग्लास की बिल्डिंग है, पता ही नहीं इतने पैसे कमाते हैं और करते क्या है, और उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? उसका फर्स्ट स्टेप इज सिस्टम. Yes, friends, wonderful. So very soon I'll be finishing with my round, and when we are coming with a team, तो जब भी वी आर मेकिंग अ टीम, द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग देम कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड. ओके, तो आप में से कितने लोगों के पास ऐसे लोग हैं, ओके, उनको करने की बहुत चाह है, 100% मोटिवेटेड भी है, पर उनको उनमें नॉलेज और समझ और आईक्यू की कमी है. आईक्यू आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम है. जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स. ओके, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपके पास ऐसे कुछ ग्राउंड स्टाफ है. यस, ग्राउंड स्टाफ है, या कोई ऐसे जो कम पढ़ाई वाले ऐसे लोग हैं, जो उनमें समझने की और सीखने की जो है ना पावर कम है.
ओके। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत होशियार है, पर ज्यादा ही होशियार है, ज्यादा ही होशियार है, राइट। वो इतने होशियार है कि माइट भी आपको कंपटीशन बने, राइट। सो हाउ डू वी एक्चुअली मेक अ टीम जो कॉम्पिटेंट भी है और कमिटेड भी है, यानी अच्छा भी काम करे और हमें भी छोड़ के नहीं जाए, ओके। और उसके लिए हमें जो चालू करना है, सिर्फ एक ही चीज चालू करना है, ओके। एक ही चीज चालू करना है, विच इज 100% रिपोर्टिंग कल्चर। ओके, जो भी काम आपके बिजनेस में चल रहा है, उन उनमें एक रिपोर्टिंग कल्चर तैयार करना है। एंड वो रिपोर्टिंग वर्बल नहीं होगा फ्रेंड्स, यस, आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। एंड दिस इज द रिजल्ट ओरिएंटेड विद साइंटिफिक परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट। उनकी हर एक एक्टिविटी, हर एक उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी वो बिजनेस में कर रहे हैं, that has to be measured and rewards and applauded, okay, because everybody in the business likes, or everybody who is not also in the business, they like to be appreciated. Just type A in the chat box that you also like to be appreciated, like, okay, because it's been a wonderful audience, and give a big round to this audience over here, that we like to be appreciated, and so does our team, okay. And the first thing what happens, agar kuch hota hai galat, to then we just keep on focusing on the minor mistakes rather than appreciating. Because let me tell you, there is one important quote, that whatever you appreciate appreciates, okay। यानी जो भी आप अप्रिशिएट करते हो वो बढ़ता है, and so does your team performance increase, yes. And there are different hiring, firing, star interviewing technique, okay. So there is a star interviewing technique, you can just google it out, because it's an extensive technique, जिसमें आप हायर कैसे करते हो उनके, हम ऐसे अंदाजे से यूजुअली वी हायर, ओके, बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन है, जिसमें हम हायर करने के टेक्निक्स क्या है, उसमें हम जॉब रोल का क्लैरिटी डॉक्यूमेंट, ओके। सो बिफोर वी एक्चुअली हायर, वी हैव टू नो दैट उनका जॉब रोल क्या है, उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, यानी उनका की रिकरिंग एक्टिविटीज क्या है, विच इज द KRA, ओके। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। KRA क्या है, KPI क्या है, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी उनका परफॉर्मेंस किस बेसिस पे मेजर होगा, okay. And there is a big important concept which is called as PC, which is called as the process coordinator, okay. So ये हमें पता ही नहीं है कि ऐसे भी कुछ चीजें हैं, ओके। एंड व्हेन इट इज कमिंग टू ट्रेडिंग कल्चर, और मे बी वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, और मे बी हम 5 या 10 या 20 सालों से करते आ रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं ये सब चीजें हैं, जिसके वजह से एक बिजनेस मिलियनर बिजनेस होता है, okay. So if you are getting this, just type G in the chat box, just type D in the chat box, because let me just tell you, this is a very important quote by Sir Richard Branson, okay. You must have heard about Virgin, okay. So delegation, that if you really want to grow as an entrepreneur, okay, you have to got to learn to delegate, okay. जो delegation system है, okay, तो delegation यानी क्या, how we are allotting the works, okay, to people or departments, okay, the different departments, जैसे marketing हो गया, sales हो गया, operations हो गया, accounts हो गया, okay, and management team हो गया. So how we are delegating it, because without the knowledge of delegation, okay, we cannot, because this entirely delegation, which is called as MBA operations, it's a 3 year entire big syllabus. Yes, and I have simplified things when it is coming to operations. There are different various business models, okay. When you are in operations, when you are working with team, okay, business model आप में से कितने लोगों ने सुना है, B2B business model होता है, B2C होता है, B2CH होता है. What is B2B? Like when you are serving or helping with products and services which are from business to business, okay, then business to customer and business to channel, यानी franchisee हो गया या brand license हो गया, okay. So this is the first step, we'll go very short about this. The second step is when you are getting to a business model, is deciding your HR hierarchy, यानी organization में जो steps क्या होने चाहिए, यानी वो organizational hierarchy क्या होनी चाहिए, okay. And the most easiest thing when it is coming is identifying your amazing client, यानी आपका amazing client कौन है, जो आपका सबसे बेहतर वाला प्रोडक्ट लेता है, okay. And then deciding the PRSP model. The PRSP model is nothing but profitable, repeatable,
एंड स्केलेबल एंड प्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल। तो इस टाइप का बिजनेस मॉडल क्या आपने इसके बारे में सोचा है? एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स? ओके, क्योंकि आप वही करते रहोगे तो फंस जाओगे, ट्रैप में हो जाएंगे। Okay, how do you cultivate a second line of leaders based on this performance matrix? So if you are with me, just type P in the chat box because all this is going to be on a software. वो बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग में होते हैं ना सॉफ्टवेयर, जो यूएस में जाके उनके प्रोवाइड करते हैं। सो देर इज अ टास्क डेलीगेशन, देर इज अ सीआरएम, देर इज अ आईवीआर, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑल दोस थिंग्स आर ऑन अ सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑन एन automated business model. Okay, and when we are doing this, we have to create the mission. Okay, because this mission and vision, the prayer. Okay, like when we are coming to office, there has to how many of you have charted your business mission or vision? आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे अपना बिजनेस का मिशन लिखा है, या विजन लिखा है, या आपका बिजनेस का प्रेयर लिखा है, या कंपनी पॉलिसीज लिखे है? बिकॉज until unless we don't do this, this is going to motivate your team to become competent and committed. आप में से कितने लोगों को अब तक लगता था ये क्या है, ये मिशन विजन ये क्यों लिखना होता है? यस, ये इसका फायदा क्या है? कॉज इसका फायदा यही है क्योंकि इसी का फायदा है, और किसी का फायदा नहीं है फ्रेंड्स। Because once you create your business mission, vision, and prayer, this is going to align your business, your company with the universe, with the universal mind, with the emotions, with the needs, the 6 human needs. How many of you are getting the power of this, what I'm saying today? Just type P in the chat box. P in the chat box. क्योंकि ये एक ही स्टेप है जो आपका टीम, आप सब मिलके एक साथ करोगे, जिसकी वजह से आपका टीम बनेगा क्या? कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड। बिकॉज हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम कि एक तो लोग मिलते नहीं है, मिले तो रहते नहीं है, और रह गए तो उनको आता कुछ नहीं है। yes, so just type competent and committed in the chat box, because crafting this is so important. Yes, and coming to the last one which I'm going to share is the non-millionaire secret number 6. Okay, non-millionaire secret number 6, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? ओके, दैट लाइक जो भी करना है, वर्क हार्ड, ओके, स्ट्रेस हार्ड, वरी करो, डाउट करो, फियर करो, और हार्ड वर्क से ही काम करो। ओके, बिकॉज what Bob Proctor says is that anyone who has made millions, they have not made this by hard work. Okay, this has come by strategic thinking and a certain demand for that product and service. How many of you are with me till this point? कि जब तक किसी प्रोडक्ट को एक स्ट्रेटेजिक इंक्रीज आया नहीं है, एक प्रोडक्ट या सर्विस को, तब तक उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए नहीं है। यस फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क से जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो कोई और करता है। ओके, सो दिस इज the secret to your law of attraction. Okay, everything in this world is created twice. ये वेबिनार भी 2 बार बना था। ये वेबिनार जो है 2 बार बना था, अपने माइंड में बना था, और फिर ये इधर प्रेजेंट हुआ। द सेम वे एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया भी 2 बार क्रिएट हुई है, फर्स्ट इन द माइंड ऑफ द क्रिएटर एंड देन इन एक्चुअलिटी। ओके, सो ये होता है E is equal to mc square. How many of you have heard this? E is equal to mc square. Okay, this is the Einstein energy formula. Okay, तो इसका मतलब, या थैंक यू जसकेतन पादी सर। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि बिलीव एंड योर बिलीफ विल क्रिएट द फैक्ट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आपने लोगों ने ये सुना है पर समझ में नहीं आया? जस्ट टाइप एस इन द चैट बॉक्स। लाइक E is equal to mc square पढ़ा है, रट्टा मारा है, पर समझ में कुछ नहीं आया। यस, एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक ये भी कोड सुना है दैट एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर एंड थॉट्स इज सी। ओके, okay, so if you want me to explain this in very simplified way, okay, just type s in the chat box. Yeah. Thank you, Anita ma'am. Okay, so in one sentence, I'm explaining one sentence. Okay, so if you ये आपको हाथ दिख रहा है मेरा? Okay, if if you are able to see this hand, okay,
तो ये फिंगर आ रहा है और इधर रुक रहा है, ओके। तो ये और ये जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं एज मास, ओके। तो ये हो गया मास, ओके। बट इफ यू सी ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके इसके ये जो हाथ है इसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑल दोस थिंग्स, ओके। पर सबसे बड़ा चीज उधर क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के अंदर जाओ, इलेक्ट्रॉन के अगर अंदर गए तो उधर क्या दिखता है, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, अंडा, नथिंग। Okay, so this whole universe is nothing but a space, okay, and this energy, okay, this energy is equal to mass into speed, यानी जो भी है ये जो है मास, इसको इसको अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया एनर्जी, ओके। एनर्जी में से स्पीड ऑफ लाइट निकाल दिया, हो गया मास। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। और दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो अगर इफ यू आर अप्लाइंग दिस टू योर माइंड इज नथिंग बट थॉट्स, ओके। सो इफ यू कैन थिंक इट, यू कैन क्रिएट इट। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? एकदम सिंपल में बोला है आइंस्टाइन ने, पर हमने फिजिक्स की बुक में एकदम डिफिकल्ट करके बोलते हैं, वो इसका मतलब ही नहीं समझता। सो इफ यू वांट एनीथिंग, you just apply your thought onto that mass, and if you are looking at something, yeah, if you are thinking about something in a very positive way, and if you feel worthy about it, you feel identified about it, वो आपके लाइफ में आएगा। Yes, friends, this will manifest. Yes, thank you, Gaurav Kumar. So, how many of you like this wonderful explanation, like how I explained this E is equal to mc square? E is equal to mc square. एकदम wonderful, easy way में मैंने बता दिया आपको. Yeah, because this is based on the law of vibration. Okay, जो law of vibration होता है कि हम जिस टाइप में हम सोचते हो, उस टाइप में अपने विचारों से हम वो चीजें अट्रैक्ट होती है। Yes, and this is nothing but packets of energy. Okay, we'll be discussing very detailed about this, like how we can get this all this thing to our life just with imagination and creative visualization in a meditative state. आप में से कितने लोग meditate करते हैं? Okay, meditate करते हैं और might be बहुत टाइम से भी meditate कर रहे हैं। Yes, thank you गौरव सर। Yes, पर ऐसे लगता है, या थैंक यू अनिता मैम, पर ऐसे लगता है ये मेडिटेट करते हैं, ठीक है, चलो रिलैक्सेशन तो हो जाता है, थोड़ा एनर्जी भी आ जाता है, पर आगे हो कुछ नहीं रहा है, या आगे हो कुछ नहीं रहा है, बिकॉज देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम मैनिफेस्टेशन, ओके, विच इज गिवन बाय द हायर मेंटर्स लाइक बॉब प्रॉक्टर हो गया, टोनी रॉबिन्स हो गया, ओके। सो व्हाट दे आर सेइंग, लाइक व्हेन वी गो इनटू द मेडिटेटिव स्टेट, ओके, वी हैव टू विजुअलाइज, ओके, एंड वी हैव टू विजुअलाइज इन ऑल द लेवल्स, ओके, यानी अपने फाइव सेंसेस से, ऑडिटरी में, फीलिंग से देखना है, ओके, वी हैव टू टच, फील, टेस्ट, ओके, एंड ऑल्सो सेलिब्रेट, बिकॉज सेलिब्रेशन एंड ग्रेटिट्यूड, ओके, दीज आर द हाईएस्ट फीलिंग्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी जस्ट एफ इन द चैट बॉक्स। हाईएस्ट फीलिंग्स, बिकॉज द नेचर ऑफ द माइंड, हम जो भी है, whatever this life, whatever this business, or whatever this planet, okay, whatever we are experiencing through human consciousness, okay। ये जो human consciousness जो है, मे बी आप में से किसी लोगों ने ये सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये human mind होता है, इसके होते हैं चार पार्ट्स, ओके। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैंने नहीं मैंने नहीं किया है, ये अपने हाईएस्ट टेक्स्ट बुक में लिखा है, ओके। जो ऋग्वेदा हो गए, बिगेस्ट टेक्स्ट बुक्स, देन इवन द हाईएस्ट साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, ओके, वो सब इंडियन साइकोलॉजी भी बनाया हुआ है, ओके। सो देर आर फोर एस्पेक्ट्स, ये जो माइंड होता है उसके फोर एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है इंटेलेक्ट, ओके, जो हम स्कूल में जाते हैं, मैथ सीखते हैं, विच इज योर IQ, ओके, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज आइडेंटिटी, यानी हम आइडेंटिफाइड किससे होंगे, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जस्ट टू टेल यू, दो चाइल्ड, ओके, दे वर टू एग्जैक्ट सिबलिंग्स, यानी ट्विंस, ओके, होमोजेनियस ट्विंस होते हैं, एंड वन ट्विन दे केप्ट दैट ट्विन राइट फ्रॉम देयर बर्थ इनटू अ नॉट सो गुड अबंडेंट एरिया, यानी थोड़ा स्लम जैसे एरिया में, और दूसरे जो होमोजेनेटिक जो ट्विन था,
उसको एक अबेंडेंट, एक मिलियनर के फैमिली में रख दिया। ओके, तो आप में से क्या लगता है किसको कि किसका फ्यूचर कैसे होगा? दोनों के जीन सेम थे, दोनों के जीन सेम थे, बट व्हाट डू यू थिंक वाज द फ्यूचर, द थॉट पैटर्न, द आइडेंटिटी, द रोल मॉडल्स, ओके, ऑफ दैट चाइल्ड हु वाज विद दैट बिलियनर और मिलियनर फैमिली? Okay, and what was the identification, the thought pattern, okay, of that child who was in the slum? Exactly. Exactly. That child will catch the circumstances. Yes, we'll discuss in the next slide. And the third one is the manas. Manas is all the involuntary function, जो अपना digestion हो रहा है, respiration हो रहा है, everything which is happening. And the fourth is chitta. Chitta is which is what is called as the sakshi dhyan, which is in the nature of the mind. Okay, we will come to it in the next slide. So just take a screenshot of this if this is understood, because this we'll need further revision for this. And what Bob Proctor says is that child, okay, who was in a not so well to do family, उसका perception क्या हुआ? ओके, यानी उसने इमेजिन क्या किया उसके पीपल, प्लेसेस, कंडीशंस, और उसके बाद उसका रीजनिंग क्या हुआ कि ये ऐसे क्यों है? ओके, एंड फ्रॉम दिस रीजनिंग केम मेमोरी. ओके, एंड फ्रॉम अ मेमोरी केम अ बिहेव पैटर्न फ्रॉम विच केम विल, यानी कुछ करने की चाह या न करने की चाह, एंड देन केम हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट अ न्यू थिंग. And the sixth is the intuition. These are the six higher faculties of the mind. How many of you are mind blown to know the six higher faculties of the mind? हम सोचते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग में ऐसे क्या दिया है जो बाकी सब में दिए नहीं है. Because once we understand this, our branding, our marketing strategy, our sales, our copywriting, everything will be sorted out, and plus we'll be able to attract this in wonderful ease. Okay, and this is a very short description about identity. Like identity में क्या होता है, like self image होता है, self worth होता है, self esteem होता है. Okay, and there is lots to it. Affirmations है, incantations है, role plays है, hero role modeling है. Okay, and this is the money for a millionaire. Okay, what is money for a millionaire क्या है? But believe me friends, if I have to tell you, there are only three decisions. आप इस वेबिनार में हो या नहीं हो, every moment of time you are taking decisions based on three things. Okay, तीन चीजों की वजह से आप कोई डिसीजन लेते हो या नहीं लेते हो. ओके, पहले तो आपका फोकस किधर है. ओके, यानी बॉडी में अभी इतने सारी चीज चल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ पर मेरा डाइजेशन चालू है, मेरा रेस्पिरेशन चालू है, पर मैं उसके बारे में फोकस कर रहा हूँ नहीं. यस, मैं इधर टीवी पड़ा है या इधर और कुछ पड़ा है, आई एम नॉट फोकसिंग अपॉन दैट फ्रेंड्स. ओके, व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, वो पीपल, प्लेस, कंडीशन, सर्कमस्टेंस हो गया. उसके बाद उसका मीनिंग क्या है, ये फोकस के बाद ये चीज का मीनिंग क्या है. वो बच्चा जो है, लाइक इमेजिन यू आर आल्सो इन सच अ प्लेस when he was before 7 years of age, what meaning he was giving to his life, like whether life is a punishment or if it is a reward. Yes, and उसके बाद उसका कंडीशनिंग क्या होता है. Okay, and what is his understanding out of this whole life interpretation, और इसके बाद उसका self actualization क्या होने वाला है. Because these are the three decisions at every moment of time. And how many of you are mind blown? How many of you are mind blown with all these concepts today which you are learning? Okay, and if you are if you understand that everyone who wants to get these learnings and understand, okay, they need a coach. Because how many of you think that आप गली में अगर क्रिकेट खेलते हो तो उसको कोच लगता है गली में क्रिकेट खेलने को? How many of you think that गली में क्रिकेट खेलने को कोच लगता है? Yeah, but सबसे बड़े कोच किसके पास रहते हैं? Who has the biggest coach? Yes, Virat, Sachin, and all these people, they have coach. Because if you want the real best and the best business and the best life, you need a coach. How many of you think that you need a coach? Just type C in the chat box. आप में से कितने लोगों को चाहिए कि वो नेक्स्ट लेवल गेम खेले, एक बेहतर बिजनेस लाइफ का खेले? क्योंकि अपने पास एक ही लाइफ है, एक बिजनेस है, एक ही सोर्स है जिससे हम अपनी जॉय, अपना लाइफ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. जस्ट टाइप
F in the chat box if you want a life of fulfillment and a life of next success. Okay. So all these people, Sachin Tendulkar, Steve Jobs, they all had a coach. Yes, and even today, Bill Gates has a coach. Warren Buffett is Bill Gates' coach, by the way. Yes, and all these people. Do how many of you knew Steve Jobs' coach? Steve Jobs का coach पता है किसी को? Does anybody know Steve Jobs? Anybody wants to know Steve Jobs का coach था? Okay, so Steve Jobs' coach was Baba Neem Karori. Yes, in India, Uttar Pradesh. Yes, and what destiny this universe has brought each and every one of you. Okay, if you are in this webinar and you are with me till this end, okay, you are with me because of this universal plan, because what I am going to share, okay, it is not going to be sufficient in these 90 minutes. Okay, and I'm going to share the next opportunity, okay, for you to enroll in the next 5 days challenge. Okay, how many of you are excited that you want to learn the everything, each thing what all was shared in this webinar today? Just type E in the chat box कि आपको इसका समझ चाहिए तो I invite you, I welcome you to this next 5 days challenge. Okay, it's a 5 sessions in total. 5 sessions in total. Yes, thank you, Jaskitan Padi sir. Yes, thank you, Anita ma'am. Thank you, Gaurav Kumar. Yes, so I think so. The admin, they have shared the details of the links and payments as to when it is going to happen. Okay, but we are going to have the next opportunity to learn all this in the next 5 days challenge. Okay, and this is going to be shared by my friend and commenter over here, Dr. Gaurav Kumar. Okay, so let me just stop sharing the screen over here, because at the end of that, so how many of you are mind blown? How many of you are mind blown with all this knowledge? The non-millionaire business secret number 9, 8, 7 and 6, because these were concepts that surely you will never find at one place at one time in one webinar. Yes, and I think so. Yes, so Safal team, Dr. Gaurav Kumar has shared all the links in. So it is just a token amount of 2499, and we are going to have a wonderful 5 days challenge in which you will get to know how you will exactly put your business growth on autopilot marketing and autopilot manifestation. Okay, so let me just stop sharing. Yes, I have stopped sharing my screen. So Dr. Gaurav Kumar, if you are here, just just come online if you are over here, Dr. Gaurav Kumar. So everybody over here, like, how many of you are mind blown? How many of you think that this was a really awesome, enlightening session for you? How many of you think this was an awesome, enlightening session? Just type E in the chat box. Yes. Thank you, Anita ma'am. Wonderful. Yes, great. And so everybody who is there with me, just continue to be with me, because we have not yet done, because we have total 9 non-millionaire secrets. Okay, and the total 9 millionaire secrets which are there, the rest of the secrets, which is the non-millionaire business secret number 54321, it is going to be taken by my friend and co-mentor over here, by Dr. Gaurav Kumar. So let me just introduce. If you want me to introduce Dr. Gaurav Kumar, just type G in the chat box. Just type G in the chat box if you want me to introduce Dr. Gaurav Kumar. Yes. So let me just start the introduction over here. Okay. So, an honorary doctorate received for mentoring and coaching and a business coaching from German University. Dr. Gaurav is an MBA in IT, a PG diploma holder in corporate law and HRM. Yes, and having given 20 plus years in IT as a release manager, delivery manager,
agile code, business analyst quality. He has practiced coaching journey in parallels. Yes. And he's the author of two amazing books, friends. That includes Brain Hacker 1.0 and the best, which is the bestseller on Amazon India. And he has impacted around 10,000 individuals through his mentorship online and offline for his students ranging from the age of 18 to 80, all the business coaches. Yes. And he has spoken on 8 plus national and international stages as keynote speaker on various topics including quality and business analysis. Okay, for the very topic he has traveled more than 11 foreign countries and was accoladed for his contribution by Bob Proctor, Jack Canfield, Vishen Lakiani, Mac Attram, Robert Kiyosaki, Riopal, Siddharth Rajsekar, Coach BSR, and Surender Jayasekar. So many of them. So let's welcome with a big round of applause. Let's welcome Dr. Gaurav Kumar to add value to this awesome webinar for the next 90 minutes to share the next non-millionaire business secrets. Over to you, Dr. Gaurav